अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी तवा कलेजी की रेसिपी Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. पाउडर ऐड करना है। ये हमने मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तवे पे बनी हुई कलेजी और भी मज़ेदार बनती है। तो ये वाली रेसिपी जो है वो बड़ी ईद के लिए स्पेशल है। आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बड़ी ईद तो आने दें, रेसिपीज़ तो बड़ी ईद के लिए हमने बहुत सारी बना ली हैं और आगे भी इंशाल्लाह और रेसिपीज़ इस तरह की आएंगी। यहाँ जो है वो हमने नमक ऐड करना है 1/2 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करनी है। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा होगा। और चिली सॉस भी हमने इसमें ऐड की है 1 टेबलस्पून। थोड़ी सी स्पाइसी बनी थी हमारी कलेजी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बड़ी ईद पर तो ये सबका फेवरेट नाश्ता होता है।
अच्छा जी, तो मसाले हमने इसमें तमाम ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। कलेजी हमारी अच्छे से गल जाए, अंदर तक पक जाए। अच्छा जी, तो कलेजी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें धनिया भी ऐड कर दें, हमारे पास नहीं था तो हमने ऐड नहीं किया। कलेजी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार है और हमेशा की तरह यही सीन हुआ कि सारी रेसिपी बनाने के बाद जो है वो लाइट चली गई। तो अब इसी तरह से गुजारा करें बस। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जो बनी थी हमारी कलेजी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये रेसिपी आसान सी है, आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो को लाइक करना है, आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।